2024 में इतनी सारी शॉकिंग और अमेजिंग न्यूज आ रही है कि कुछ पे तो बिलीव करना मुश्किल है। ऐसे ही शॉकिंग न्यूज आ रही है दो अमेजिंग सिंगर्स की। यूजुअली हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी के बीच की राइवलरी की खबरें सामने आती हैं और इस राइवलरी को सालों साल तक याद किया जाता है। ऐसे ही एक न्यूज आ रही है म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड्स के बारे में। Today we'll be talking about the news that has left us all shook. If you would have told me this a few days back that rapper Badshah and Honey Singh would be back to being best friends, I wouldn't have believed you. Instead, for a moment, I could have even believed that the earth is flat. But as it is said, never say never. Now let's get straight to the subject. So Badshah has publicly ended his feud with rapper Yo-Yo Honey Singh, stating that there was a phase in his life where he held a grudge against him, but now he wants to call it quits. He seemingly took the first step to end his long-standing beef with Honey during Greyfest 2024, held in Dehradun on May 24. और ये न्यूज़ दोनों के फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं थी, but they were happy. Finally, 2024 is healing everything. During his performance, Badshah stopped midway to take respectful stand on Honey. He said, "There was a phase in my life where I held this grudge against one, and now I want to call it quits and leave that grudge behind, and that is Honey Singh." Badshah said, "I was unhappy because of some misunderstandings, but then I realized when we were together, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत थे." He further added, "Today, I just want to let everyone know I have left this phase behind and I wish him all the best." Not long back, in one of his live shows, when fans were chanting Honey Singh's name, Badshah had said, "लिरिक्स लिखकर देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा." बादशाह की ये स्टेटमेंट भी हेडलाइंस में टॉप पर थी। बट अभी तक हनी ने बादशाह की इन स्टेटमेंट्स पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। इनफैक्ट फैन तो हनी के रिस्पॉन्स का ही वेट कर रहे हैं। आपका बादशाह के इस ट्रूथ ऑफर पर क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं।